Hello friends, with this video I am starting difference between series जिसमें मैं cover करूंगा various important topics and the topic which I have chosen today for today's discussion is difference between fundamental rights and directive principles of state policy. So इसको डिस्कशन करने से पहले मैं आपके साथ एक कमिटी की रिपोर्ट डिस्कस करना चाहता हूं जो कि फंडामेंटल राइट से बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है। तो ये जो कमेटी की जो हेड थे वो तेज बहादुर सप्रू जी थे। तो ये जो कमेटी है कॉमनली रेफर्ड टू एज द सप्रू कमेटी रिपोर्ट। इट कंसिस्टेड ऑफ 30 मेंबर्स, इसमें 30 मेंबर्स थे और ये जो रिपोर्ट है ये 1945 में पब्लिश हुई थी। इसको हेड किया था तेज बहादुर सप्रू जी ने, जो कि उस समय में बहुत ही रिनाउंड लॉयर भी थे, वकील भी थे, अधिवक्ता थे। द रिपोर्ट वॉज 343 पेजेस। ये बहुत ही लंबी रिपोर्ट आई थी और इसको अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट सप्रू कमेटी। सो इसका एक रीजन भी है। आई नो दिस इज नॉट today's topic, and then also I'm discussing because this report had a section on fundamental rights, and the committee engaged with the issue of dividing rights into justiciable and नॉन justiciable rights. So basically इस रिपोर्ट में, सप्रू कमेटी की रिपोर्ट में इंडिविजुअल राइट्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। इसमें इंडिविजुअल राइट्स को justiciable and non-justiciable categories में डिवाइड किया गया। The justiciable rights, as we know, are the fundamental rights, and whereas the non-justiciable ones are the directive principles of state policy. One additional information, एक जो और सूचना मैं देना चाहता हूं कि even Sir B.N. Rao, the constitutional advisor, who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly, recommended that the rights of an individual should be divided into two categories, justiciable and non-justiciable. Now, हम आते हैं आज के टॉपिक के मेन डिस्कशन पे, जो है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इसमें कुल मैंने 20 डिफरेंसेस लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई विल कवर ईच वन बाय वन। सो जो फर्स्ट वन है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो मेंशन्ड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के में मेंशन्ड है। आर्टिकल 14 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, whereas in the case of directive principle of state policy आर्टिकल 36 से 51 डील करता है डीपीएसपी से। तीसरा, जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स है that are guaranteed to Indian citizens by the Constitution of India, whereas in the case of DPSP are guidelines to be followed by the government while framing policies. So basically government सरकार को इनको follow करना पड़ता है, जब भी कोई policy बनाती है उनको follow करना भी चाहिए। The fourth one is fundamental rights prohibits the state from doing certain things as they are negative in nature. Whereas in the case of directive principle of state policy, the DPSP requires the state to do certain things as they are positive, affirmative in nature. The fifth one is fundamental rights are legally enforceable by the courts in the case of their violation. And in the case of directive principle of state policy, DPSP are legally not enforceable by the courts in the case of their violation. Now the sixth one is the fundamental rights promote the welfare of the individual and hence they are personal and individualistic. और जो DPSP है, it promotes the welfare of the community, hence they are societal and socialistic. The seventh one is fundamental rights help in promoting welfare of each and every citizen, whereas directive principle of state policy helps in promoting welfare of the entire community. Now the eighth one is that as per the law, the violation of fundamental rights is punishable. आपको पता होगा, in the case of violation of fundamental rights, the citizen can directly move to the High Court under Article 226 of the Constitution of India or Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India in the case of violation of fundamental rights. Now, coming to two differences, in the case of violation of directive principles, it is
not a punishable crime. So the citizens cannot code act to the code. The ninth one is fundamental rights are justiciable as they can be enforced legally by the courts if there is a violation. I have already discussed with you under Article 226 and Article 32 of the Constitution of India. Whereas in the case of directive principle of state policy are non-justiciable as they cannot be enforced legally by the courts if there is a violation. The 10th one, fundamental rights represent the civil and political rights of the citizens. Whereas directive principle of state policy embody social and economic rights. The 11th one is the courts are bound to declare a law which violates any of the fundamental rights as unconstitutional and invalid. Whereas in the case of directive principle of state policy, the courts cannot declare a law which violates any of the DPSP as unconstitutional and invalid. The 12th one is फंडामेंटल राइट्स आर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. ये एक बंदिशें हैं जो कि स्टेट के ऊपर इम्पोज्ड है कि स्टेट क्या क्या नहीं करेगा जिससे कि किसी का मौलिक अधिकार का हनन ना हो. Whereas directive principles of state policy are directions for the government to achieve societal goals. The 13th one is during the proclamation of emergency. जब भी इमरजेंसी लागू किया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स है मौलिक अधिकार है उस पूरा सस्पेंड हो जाएगा. Whereas ऐसा कोई प्रोविजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के केस में नहीं है. Or we can say that DPSP cannot be suspended under any circumstances. The 14th one is that after the 44th Amendment Act, even during emergency, Article 20 and 21 cannot be suspended. So 44th Amendment के बाद दो आर्टिकल्स हैं, Article 20 and 21 of the Fundamental Rights, जो कि सस्पेंड नहीं हो सकते इमरजेंसी के समय भी, आपातकाल के समय भी. और I have already discussed that DPSP के केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. सो ये सस्पेंड नहीं हो सकते. 15th फंडामेंटल राइट जो है वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसको यूएसए से बोरो किया गया था. Whereas as far as DPSP is concerned, India borrowed the DPSP from Irish Constitution of 1937. और जो आयरिश यानी कि जो आयरलैंड है उन्होंने खुद से इसे बोरो किया था स्पेन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से. The 16th one is in case of conflict between fundamental rights and directive principle of state policy, कभी भी अगर fundamental rights और directive principle of state policy में अगर conflict होता है, कोई भी विवाद खड़ा होता है, तो fundamental rights would always prevail over DPSP. Whereas DPSP जो है कभी भी fundamental rights पे ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगा. 17 fundamental rights जो है वो aim at establishing political democracy in the country, whereas directive principle of state policy aim at establishing social and economic democracy in the country. 18th fundamental rights जो है do not require any legislation for their implementation. fundamental rights कोई विधि उसको कोई मौलिक अधिकार को कोई विधि की जरूरत नहीं है उसको लागू करने के लिए, वो अपने आप ही इन्फोर्स होता है. Whereas DPSP जो है it requires legislation for their implementation because they are not automatically enforced. The 20th is fundamental rights, the 19th one is fundamental rights have legal sanctions. इनके ऊपर legal sanctions है, whereas DPSP have moral and political sanctions. The 20th one is fundamental rights are not an end in themselves but are the means to an end, whereas the directive principle of state policy, the end is specified in the DPSP कि end क्या होगा, अंत क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए या अंत क्या होना चाहिए इन दोनों चीजों का. सो बिफोर इस वीडियो को समाप्त करने से पहले दो इंपॉर्टेंट कोट्स जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कहा गया, आई वांट टू डिस्कस विद यू द कोट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो फेमस कोट पहले महात्मा गांधी के बारे में क्या कोट्स डिस्कस करते हैं. महात्मा गांधी सेड फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी दोज राइट्स द एक्सरसाइज ऑफ व्हिच इज नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन बट दैट ऑफ द होल वर्ल्ड. मींस मौलिक अधिकार केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिनका प्रयोग न केवल नागरिक के बल्कि पूरे विश्व के हित में हो. He beautifully said about the fundamental rights. Whereas अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में सर BN राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने कहा था कि
DPSP are model precepts for the authorities of the state. Means कि जो DPSP है वो राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश है। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। होपफुली आई हैव कवर्ड ऑल दी मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स। Thank you so much for watching this video. Do watch other videos also in difference between series. Thank you.